Good morning, everyone. I'm Dr. Sunil Lumana from Palm Hospital, CTBS surgeon. So we are happy to share you one success story of a child, Myra Pandey. It's a large VSD child with the PDA. The patient having recurrent respiratory tract infections and child is not growing from last 1 year, and the child weight is not increased from 5 kgs. We have operated the child, and child was extubated on the same day, and child recovered very well, and the patient was discharged on the 5th day. And we have a great good team for doing a pediatric cardiac surgery headed by Dr. Vijay Agarwal sir, and we have a designated pediatric cardiac anesthetician here. We have an intensivist taking care of the child, and we have a proper setup with all the facilities as per the international standards. And we would like to also say that we offer services for all Ayushman patients and CM Fund also. And we want to do all high-end pediatric cardiac surgery in Lucknow. We're happy to share this success story of this child. Thank you. मेरा नाम सुधांशु पांडे है। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम लक्ष्मीदासपुर, और मेरे बच्चे को दिल में प्रॉब्लम थी। ये मेरे बच्चे का 4 महीने का था तब पता चला, और इसके लिए मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल में जांच करवाए, चेकअप करवाए, मालूम तो पड़ा, लेकिन इलाज सही ढंग से नहीं हो पाया। फिर मुझे मेरे रिलेटिव से मालूम पड़ा टेंडर पाम हॉस्पिटल के बारे में, जिसको लेके मैं बच्चे को यहाँ लेके आया, दिखाया और बच्चे को भर्ती किया, और उसका सुनील सर और ऑपरेशन किया, जिससे बच्चा अभी परफेक्ट है। और आज हम लोग और यहाँ की फैसिलिटी वगैरह सब अच्छी है, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं।